learners, welcome back to my channel. So I hope समस्ते बहुत ही भलरे थिबे. So आज हम डिस्कस करिबा learning as mean making and knowledge construction. So it is a theory that views learners as active participants who build their own understanding of the world by connecting new information to their existing knowledge and experiences. This process is not about passively receiving facts but about actively interpreting, organizing, synthesizing information through interaction, experimentation, and social dialogue. ठीक ଅଛି? So learning as mean making ଆଉ knowledge construction ଗୋଟେ ଏମିତିଆ theory जोटा learner ମାନେ active participant ଥାନ୍ତି. ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ନିଜର ଓନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ନିଜେ ବିଲ୍ଡ କରନ୍ତି. କେମିତି କରନ୍ତି? ବାଇ କନେକ୍ଟିଂ ନ୍ୟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟୁ ଦର୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ନଲେଜ୍. ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନଲେଜ୍ ଅଛି ଅଲରେଡ଼ି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଅଛି ତା ସହ ନ୍ୟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍କୁ ସେ କନେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି. ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ନଲେଜ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରନ୍ତି. सो ये प्रोसेसटा माने पैसिवली रिसीविंग फैक्ट्स नुहे. ठीक अच्छे, यहाँ हूँ कौन ना एक्टिवली इंटरप्रेटिंग, ऑर्गेनाइजिंग और सिंथेसाइजिंग इनफॉरमेशन केमिति ना थ्रू इंटरेक्शन हो गला बा एक्सपेरिमेंटेशन हो गला बा सोशल डायलॉग. सो की कॉन्सेप्ट कौन अच्छे देखो, एक्टिव प्रोसेस. लर्नर्स आर नॉट पैसिव रिसेप्ट्स, दे एक्टिवली क्रिएट मीनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग. सो लर्नर माने पैसिव नुहंती, एटा पूरा एक्टिव थांती. ठीक अच्छे, एक्टिव थाई कि से माने लर्निंग रे मीनिंग आ अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करती. तापरे नॉलेज कंस्ट्रक्शन. सो न्यू नॉलेज से माने बिल्ड करती केमिति, ताको जे फाउंडेशन ऑफ प्रायर नॉलेज और एक्सपीरियंस माने प्रीवियस नॉलेज जहाँ भी अच्छे एक्जिस्ट अच्छे जोटा सेटा से नुआ नॉलेज को बिल्ड करती. से माने कंस्ट्रक्ट करन निजर स्कीम्स बा ऑर्गेनाइज करती इनफॉरमेशन. मीन मेकिंग देखो, लर्निंग गोटे एमती प्रोसेस जोटारे आम इंटरप्रेटेड करूँ, ऑर्गेनाइज करूँ, आम कनेक्ट करूँ न्यू इनफॉरमेशन को टू व्हाट इज ऑलरेडी नोन. सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट देखो, गोटे लर्नर सोशल बा कल्चरल बैकग्राउंडटा सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करे कहा उपरे, आइडियास उपरे, केमते से कंस्ट्रक्ट कर नॉलेज उपरे. सो लर्निंग होची गोटे सोशल और कोलैबोरेटिव प्रोसेस. हाउ लर्निंग हैपेन्स. सो इंटरेक्शन एंड एक्सपीरियंस देखा, लर्नर्स मैंने कंस्ट्रक्ट करते नॉलेज थ्रू डायरेक्ट इंटरेक्शन विथ देयर एनवायरमेंट. इंक्लूड कौन कौन अच्छे देखो, एक्सपेरिमेंटेशन, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज और रियल वर्ल्ड सिचुएशंस. डायलॉग, engaging in conversation with peers and teachers help learners to clarify idea. जितने से engage थांती conversation रे, तांको peer group हो मतलब तांको जे सहपाठी जाओ कहा जाए peer group बा टीचर्स मान सह हो, तो ताद्वारा कौन हुए ना तांकर आइडियाटा क्लारिफाए हुए. ठीक अच्छे, माने क्लीयर हुए, तांकर अंडरस्टैंडिंगटा बिल्ड हुए. ठीक अच्छे. तापर देखो रिफ्लेक्शन. लर्नर माने मस्ट हैव टाइम एंड अपॉर्चुनिटीज टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्सपीरियंस एंड कंस्ट्रक्ट रिलेशनशिप्स एंड मेटाफोर्स टू मेक सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन. टीचर का रोल वेरी इंपॉर्टेंट. टीचर्स एक्ट एज फैसिलिटेटर्स. टीचर रोल कौन से माने फैसिलिटेटर हिसाब रे एक्ट करती, तांको गाइड करती से जे प्रोसेस रे बाय आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस. ठीक अच्छे, बाय प्रोवाइडिंग डाइवर्स मटेरियल्स, बाय क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट फॉर एक्टिव इंक्वायरी रादर देन सिंपली लेक्चरिंग. ठीक अच्छे, तांको से फैसिलिटेटर हिसाब रे गाइड करती, तांको ओपन एंडेड क्वेश्चंस पचारती, तांको डाइवर्स मटेरियल्स दिखती, गोटे एनवायरनमेंट एमती क्रिएट करती जोटारे एक्टिव इंक्वायरी अच्छी. ठीक अच्छे, rather than only giving lectures. ठीक अच्छे. देन आसला आमर MCQ. What is mean making in learning? mean making कौन देखो, यहाँ हूँ मेमोराइजिंग इनफॉरमेशन भी, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट भी और क्रिएटिंग पर्सनल कनेक्शंस भी. सो कौन हम पिला माने ऑल ऑफ द एबव. Which of the following is a characteristic of mean making? देखो कोटा हम एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, बिकॉज ए सबू हूँ नेगेटिव अच्छी. व्हाट इज द रोल ऑफ प्रायर नॉलेज इन मीन मेकिंग. प्रायर नॉलेज रो कौन रोल रही देखो, आंसर हम सी, इट सर्व्स एज अ फाउंडेशन ऑफ न्यू लर्निंग. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मीन मेकिंग. आ भितर कोटा देखो, आंसर हम बी,
applying a concept to a real life situation. अच्छा, what is knowledge construction? Knowledge construction कौन? Answer होगा B, creating personal understanding. Which of the following is a characteristic of knowledge construction? कोटा देखो, active engagement with ideas. What is the role of social interaction in knowledge construction? Social interaction रो कौन रोल रही knowledge construction रे? It facilitates learning and understanding. Which of the following is an example of knowledge construction? कोटा देखो, knowledge तुम्हें केमती construct करिवो? कोटा देखो, discussing a topic with peers. ता द्वारा कौन हबो? मु भी किछि कहिली मते जा जणा छि से टॉपिक रे, सी भी किछि कहला, ता द्वारा मो नॉलेज ता कोन हला? कंस्ट्रक्ट हला. कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग कोटा? व्हाट इज कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग? वेरी इंपोर्टेंट. देखो एटा मन रखिबो, अ लर्निंग थ्योरी दैट एम्फासाइजेस एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज. जेहेतु कंस्ट्रक्टिविस्ट मागिछि ना, तो कंस्ट्रक्शन माने ताठू सिमिलर थिबो ना. सो कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग रे हमें कोन करू? हमें नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करू. Which of the following is a characteristic of constructivist learning? कोटा देखो, आंसर हबो B, student centered learning. What is the role of the teacher in constructivist learning? Role कौन? एवं हम पढ़ी के आसचे facilitator. Which of the following is an example of constructivist learning? कोटा देखो, conducting a science experiment. ता द्वारा कौन हबो? हमें knowledge टा construct कर परिबा. ठीक अछि. What is authentic assessment? Authentic assessment कौन? ना यह गोटे एमिति टाइप रो इवैल्यूएशन दैट मेजर स्टूडेंट्स लर्निंग. सो आंसर हबो A. Which of the following is a characteristic of authentic assessment? कोटा हबो देखो, real world applications. What is the role of self assessment in learning? कोटा हबो देखो, C, it facilitates learning and understanding. Which of the following is an example of self assessment? कोटा देखो, reflecting on one's own learning. जेहेतु सेल्फ एसेसमेंट पकई ना, सेल्फ माने कौन? ओन, निजर. तो सेठी देखिबे आपण ओन जे लेखाई बा सेल्फ लेखाई थिबो, सेठी आपण जान दे परिबे. मेटाकोग्निशन, वेरी इंपोर्टेंट. मेटाकोग्निशन कौन? आंसर हबो C, a process of thinking about and reflecting on one's own learning. Which of the following is an example of metacognition? कोटा देखो, reflecting on one's own problem solving process. What is the role of feedback in learning? Feedback विषय हम पढ़ी के आछे बहुत थर. It facilitates learning and understanding. Which of the following is an example of feedback? कोटा देखो, a teacher's comment on a student's work. पिलाटा केमिति काम करिला ता विषय टीचर कमेंट करले, तो से फीडबैक देले ना, राइट. A student self assessment, गोटे पिलार सेल्फ असेसमेंट, सेटा भी फीडबैक. अ पीयर रिव्यू, मोर गोटे सहपाठी रिव्यू देला, सेटा भी गोटे फीडबैक. सो ऑल ऑफ द एबव.